अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ अकाउंट्स रिसीवेबल। नाउ अकाउंट्स रिसीवेबल एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है अकाउंट्स पेबल का। ओके, अकाउंट्स पेबल में हमने समझा था कि अकाउंट्स पेबल इज ऑल अबाउट वेंडर इनवॉइसेस, वेंडर पेमेंट्स। सिमिलरली accounts receivable is all about customer invoices and customer payments. This is accounts payable. This is accounts receivable. Accounts payable is all about purchase. If accounts payable is about purchase, accounts receivable में क्या होगा? Sales, correct? Yes, sir. Accounts payable में हम वेंडर के साथ डील करते थे। इट वॉज ऑल अबाउट वेंडर्स, जिसको हम सप्लायर भी बोलते थे, और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोलते थे। Similarly, accounts receivable is opposite. Accounts receivable is all about Customer, customer sundry debtors. और sundry debtors. Accounts payable में हमने देखा था कि we have procure to pay cycle. Accounts receivable में we have order to cash cycle. अब इस procure to pay cycle में हमने documents पोस्ट किए थे, right? We posted purchase order, we posted vendor invoice, we posted vendor payment document. अब अकाउंट्स पेबल में अगर परचेज ऑर्डर होगा तो अकाउंट्स रिसीवेबल में क्या होगा? Receive अकाउंट्स purchase पे order, right? अकाउंट्स पेबल में हम परचेज कर रहे हैं, इसलिए हम परचेज ऑर्डर पोस्ट करते हैं। Hmm. अकाउंट्स रिसीवेबल में हम सेल्स कर रहे हैं, तो हम कौन सा ऑर्डर पोस्ट करेंगे? No idea, sir. सेल्स ऑर्डर, Okay. वी ऑल्सो कॉल इट एसओ। Yes. अकाउंट्स पेबल में वेंडर इनवॉइस होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल में वी हैव कस्टमर इनवॉइस। एंड सिमिलरली सिक्स्थ पॉइंट, अकाउंट्स पेबल में वेंडर पेमेंट डॉक्यूमेंट होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल में वी हैव कस्टमर पेमेंट डॉक्यूमेंट। ओके, अब लेट अस सी अकाउंटिंग एंट्रीज फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू।
ओके, अकाउंट्स पेबल में व्हेन वी पोस्ट और व्हेन वी परचेज एनीथिंग, हम क्या अकाउंटिंग एंट्री करते थे? Purchase account to vendor. परचेज अकाउंट डेबिट Debit to vendor account. टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट। एंड जब हम वेंडर का पेमेंट करते थे उस टाइम पे वेंडर विल गेट डेबिट To cash. टू कैश और Bank. बैंक, दिस विल बी क्रेडिट। अकाउंट्स रिसीवेबल में इसकी ऑपोजिट एंट्रीज होगी। फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ दिस वेंडर अकाउंट, अब अकाउंट्स पेबल में हमें वेंडर को पैसे देने होते थे, इसलिए वेंडर अकाउंट वाज क्रेडिटेड। अकाउंट्स रिसीवेबल में हमें कस्टमर से पैसे आने, so customer account will be debited and sales revenue account will get credited। एंड जब कस्टमर हमें पेमेंट कर देगा उस टाइम पे आर बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कस्टमर अकाउंट और अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट विल गेट credited। Credit. ओके, अकाउंट्स रिसीवेबल की अकाउंटिंग एंट्रीज क्लियर है? Yes, sir. रोहित, आपको समझ आ रहा हाँ सर। है? ओके, अब सिमिलर टू अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल में भी मेन लेजर एंड सब लेजर का कंसेप्ट फॉलो होता है। नाउ जनरल लेजर इज आर मेन लेजर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल इज आर सब लेजर, मीनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल का जो भी बैलेंस होगा वो जनरल लेजर में फ्लो करेगा। अब अकाउंट्स पेबल में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे रिगार्डिंग द बिजनेस प्रोसेस और रिगार्डिंग द कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। I'll just copy these points और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नाउ
Our first point was in SAP S/4HANA, vendors are created as business partners. ये सेम चीज कस्टमर्स के लिए भी फॉलो होती है. I will just replace this vendor from with customers. Okay. S/4HANA में कस्टमर भी एज अ बिजनेस पार्टनर्स क्रिएट किए जाते हैं. Next, business partner is a central database for all the vendors, customers, employees and all the other entity जिसके साथ कंपनी डील करती है. Next, we will create accounts payable master data at BP level, business partner level. Replace accounts payable with accounts receivable. We will create accounts receivable master data at BP level and then extend it to financial accounting vendor. Instead of vendor, give it customer. ये 3 पॉइंट समझ गए? Yes, sir. रोहित, आपको समझ आया? हाँ सर। Accounts receivable में भी we have configuration data, master data and then transactional data. And जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स होते हैं, इन कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स का प्रोसेस सेम रहेगा. जस्ट इंस्टेड ऑफ वेंडर्स वी विल हैव कस्टमर्स एंड ट्रांजैक्शन कोड चेंज होंगे. गो टू SAP. अब फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन vendor account groups. Just replace this vendor with customer and the transaction code will be OBD2. OBD2. Press enter. अब सेम इंटरफेस अकाउंट्स पेबल के लिए भी आया था, वेंडर अकाउंट ग्रुप्स के लिए भी आया था एंड अकाउंट्स रिसीवेबल कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स के लिए भी सेम इंटरफेस रहेगा. जस्ट इंस्टेड ऑफ वेंडर्स हम यहाँ पे कस्टमर्स क्रिएट करेंगे. क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज. नाउ लेट्स से फर्स्ट चेक कि कौन सा अकाउंट ग्रुप फ्री है क्रिएट करने के लिए. We will create two account groups. One is for domestic customer and another is for foreign customer. And I'll just give HNMO domestic customer and HNMO foreign customer. Okay. And in account groups के लिए we will create number ranges. Same process हमने accounts